Hello students, today we are going to do the summary of the poem A Photograph. The poem A Photograph is a nice poem written by Shirley Tulson. This poem is a tribute to the poet's mother. This poem compares the internal stage of natural and the momentary state of human. मैंने आपको समझाया था कि human life is mortal. It is changing and natural aspects are permanent. There is also given a line in the poem, see that changed less. कुछ इस टाइप की एक लाइन है, उसमें दी हुई है कि समुद्र बहुत कम चेंज हुआ है. The poem reflects the passage of time and its three stages. This poem conveys the message of impermanence of life, that nothing is permanent in our life. The poetess wanted to show that the change is the only static thing in life. Means everything have to change one day. If today if we are child, we will be young, and if we are young, we will be old one day, and if we are old, then death is also the truth of our life. So nothing is permanent in our life. It is then this poem shows the impermanence of life. The poetess wanted to show that the change is the only static thing in our life. Photograph is not a positive print recorded by a camera. It is rather the capturing those moments which one will move and never get back. देखो, जो कैमरे ने फ़ोटो खींची थी उसका बता रखा है कि वो भी एक तरीके का एक हिंट है हमारी लाइफ के लिए, कि जो कैप्चर किया है कैमरे ने, वो कैप्चर की वो चीज़ तो परमानेंट हो गई, लेकिन दिस ऑल्सो शोज अ थिंग दैट मोमेंट विल नेवर गेट बैक, कि वो मोमेंट वापस कभी नहीं आ सकता. द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पैसेज ऑफ टाइम एंड थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ. द फर्स्ट स्टेज, थ्री स्टेजेस है ना पोएम में. फर्स्ट स्टेज में क्या दिखा रखा है? मदर, द फोटोग्राफ शोज हिज मदर enjoying a holiday on the sea beach along with her two cousin sisters. All are smiling in the photograph. She was at the time she was 12 years old. The second stage ट्रांसपोर्ट्स अस टू 20 और 30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद की बात बताता है. दिस स्टेज शोज द मदर लाफिंग एट द पिक्चर एंड द वे शी एंड हर कज़न वर ड्रेस्ड फॉर द बीच. किस तरीके से उनको ड्रेसअप किया था उनकी मदर ने. इन द थर्ड स्टेज द फोटो, द पोइट सैडली रिमेंबर्स द डेड मदर with his broken heart. She is no more now. These three stages reflect the truth of our life. Death is the ultimate result of our life, and once the time is gone, nothing can turn it back. The photograph revives nostalgic waves in the poetess. So this is the summary of the poem. This is not only the summary of the poem, this also you can also find out from this summary one more question, that is the message of the poem. पोएम मैसेज क्या देती है? स्टार्टिंग की 2-4 लाइन उठा के लिख दो, दैट इज कैन बी द मैसेज ऑफ द पोएम. होप ये आपको समझ आया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.